सर, मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा सवाल किया था। इट वाज रिगार्डिंग सोशल मीडिया डिटॉक्स। तो चूँकि आपने टॉपिक जो है वो खुद सोचो के बारे में, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड सोचा था जो आपने कुछ बातें की थी। तो उस हवाले से मेरे कुछ कंसर्न्स थे जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। सर, आपने कहा था कि ये जो हम मतलब आपने ये कहा था कि मेरे पास अगर कोई आता है और वो मुझे कहता है तो मैं उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देता हूँ, साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं भेजता, क्योंकि हम हैप्पीनेस इंजेक्ट करते हैं या एसएसआरआईज देते हैं या सेडेटिव्स देते हैं और उसको जो है वो बीपीडी को बाइपोलर को बीपीडी में कन्वर्ट कर देते हैं। उस इस तरह की कुछ चीज़ें आपने बताई थी। तो सर, मैं उस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बल्कि आपसे पूछना चाहती हूँ कि डू यू थिंक दैट इट इज लाइक जो साइकाइट्रिक इलनेसेस है दे आर एज मच ऑफ अ डिसऑर्डर एज हाइपरटेंशन और डायबिटीज, या जिस चीज़ के लिए हम लोग बाकी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि हमेशा मतलब आपको पता है मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और पाकिस्तानी सोसाइटी वो है जहाँ पे मतलब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है और मतलब हर डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हर बंदे के पास चले जाएंगे, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आएंगे। और स्पेशली खवातीन के उनको पीरों फकीरों के पास, फेथ हीलर्स के पास भेजते रहेंगे, कभी गैस्ट्रो कभी किसके पास, और लेकिन ये कि वो एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं होगा उनका। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है आई एग्री कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे डिप्रेशन है उसका थेरेपी से ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट साइकोसिस, व्हाट अबाउट थिंग्स को जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं, तो उसके लिए जब हम दवा दे रहे होते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन आवर बेस्ट पॉसिबल स्किल्स कि उस बंदे को उस दवा की उस वक्त जरूरत होती है तो तभी उसको दी जा रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि बहुत दुनिया आपको फॉलो करती है, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं और इन्फ्लुएंस है आपका, तो जब आप ये कह रहे हैं कि नहीं साइकाइट्रिस्ट के पास मत जाना, तो इट्स एक्चुअली अ डिसर्विस टू दोस पीपल हु एक्चुअली नीड हेल्प या साइकाइट्रिक हेल्प, या जिनको हार्ड कोर साइकोलॉजिकल इलनेसेस है। ये मेरा पहला सवाल था। और इसके अलावा आपने ये जो कहा था कि कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए थे कि 1 in 4 पीपल इन पाकिस्तान हैव बीपीडी, तो मैंने आई डिड ट्राई टू फाइंड आउट बट आई कुडंट फाइंड दिस स्टेटिस्टिक्स एनीवेयर कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से। तो अगर आप कोई रेफरेंस के बारे में दे दो, आई वुड लाइक टू नो दैट। और तीसरा और आखिरी सवाल ये है मेरा कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी साइंस है उसकी जैसे मेडिसिन है, साइकोलॉजी है, साइकाइट्री, एस्ट्रोफिजिक्स है, तो उसकी इंटेलेक्चुअल कोर तक पहुंचने के लिए क्या वो चीजें हैं या कौन सा वो पाथवे है जिसको फॉलो करके हम उसकी इंटेलेक्चुअल कोर तक पहुंच सकते हैं? ये आखिरी सवाल जो है ना आपका, ये 1 करोड़ रुपए का सवाल है। पहले मैं बाकी के 2 सवालों का जवाब दे दूं। मेरा इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं है, मैं चाहता टॉपिक पे नहीं आज, बहुत ज़रूरी टॉपिक है इसलिए मैं छोटा जवाब देता हूँ। एक तो ये कि द वे APA हैज़ प्लेस्ड इटसेल्फ एंड द वे इट हैज़ बाउड डाउन टू द बिग फार्मा and the way they made a business out of this, I am not going to support it no matter how clean the resume of a psychiatrist is. And बड़ी लड़ाई में अंदर आप लोग छोटे छोटे पॉन बन गए हैं और ऐसे दवाइयाँ इशू कर रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स तक अभी चल रहे हैं, वो भी बिग फार्मा ने इशू करनी शुरू कर दी हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हर बात पे वाले सेडेटिव देना या एंटी डिप्रेसेंट्स देना, हालांकि उसको कॉग्निटिव थेरेपी की जरूरत थी, आपने उसको मेडिसिनल थेरेपी पर डाला। दिस इज नॉट योर फर्स्ट लाइक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस के बाद आपकी प्रोटोकॉल सेकंड डिग्री के ऊपर मेडिसिनल होनी चाहिए थी। और इतनी हाई पोटेंसी चलें आप लो पोटेंसी ड्रग से स्टार्ट करें। एज सून एज यू डायलेट द रिसेप्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द neurotransmitters, you are not going to leave that patient able to recover through his own natural immune system. You need to understand, this is not a joke when it comes down to playing with the chemistry of the human being. आप इसलिए CBT तक मैं कहता हूँ कि चलो CBT तक लो, CBT के आगे जाना है तो 50 दफ़ा सोचो कि जब आपने कोई केमिस्ट्री चेंज करने की, ऑल्टर करने की बात करनी है। बाइपोलर पेशेंट्स को आई अंडरस्टैंड दैट, मगर आप खुद बताएं कितने बाइपोलर देख लेती हैं आप साल में? 50, 100? बाकी के जितने भी आपके इन पेशेंट्स होते हैं उन सबको उसी की एक डोजेज की परसेंटाइल क्यों दी जा रही होती है? SSRI is one of the many drugs that you guys are injecting in human beings. I think APA influenced जितने भी इवन साइकोलॉजिस्ट को भी मैं ये कहता हूँ, बाय द वे आप याद रखिएगा, मैं सिर्फ साइकियाट्रिक मेडिसिन की बात नहीं करता हूँ, कि जब तक आप इस चीज को, इसकी सेंसिटिविटी को मद्देनजर नहीं रखते। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, एक बच्चा फुल का एडिक्ट आपके पास आता है, जिद्दी है जी, टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, ADHD डिक्लेयर होने की चांसेस के ज्यादा है। माँ खुद आदि साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट बनी होती है, आती है खुद मुंह से ADHD बोल रही होती है,
आपको पता ना ADHD की प्राइमरी जी जी बिल्कुल डोपामिन डायलेशन, आई एम प्रीटी श्योर यू गेटिंग अ लॉट ऑफ दैट। और आप अगर डोपामिन एगोनिस्टिक ड्रग थेरेपी दे देते हैं आगे से, डोपामिन एगोनिस्टिक ड्रग थेरेपी क्यों दे रहे हैं? आपको ये नहीं पता कि क्लाइमेट इटसेल्फ डोपामिन एगोनिस्टिक है उसका? You need to be a very conscious human being before you become a conscious doctor. Secondly, you cannot put people in a petri dish unless you have a very very clear prognosis कि ये किसी भी लेवल के ऊपर एडिक्टिव नहीं होगा या फिर केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी इसकी। और मैं आपको भी बता दूं, बड़े बड़े प्रोफेसर ने मुझे कहा है, ये इस्लामाबाद के और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मैं साइकाइट्रिस्ट की बात कर रहा हूँ कि और यार टेपर इट आउट, टेपर इट आउट, व्हाई द हेल डिड यू हैव टू टेपर इट आउट? टेपर आउट से पहले आपने स्पाइक अचीव करवानी है उस ड्रग, तब तक आप डायलेट कर चुके हैं उसकी रिसेप्शन। आप उसको टेपर आउट करें या ना करें, दिस मैन इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट सबकॉन्शियसली ऑन दोज रिफ्लेक्सेस जो कि आपके ड्रग की वजह से हुई है। मैं बहुत टेक्निकल बातें आपसे कर रहा हूँ, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। I want to give you a very small answer and precise जी answer. नहीं, बस मैं सिर्फ इसमें मेरी दो जो चीजें हैं वो मैं आपसे, जैसे आपने ये बात कही कि आप उसको नेचुरली उसको रिसेप्टर्स डायलेट ना करें, तो डिप्रेशन का नॉर्मल कोर्स 6 मंथ से 1 ईयर तक जो है वो नॉर्मली एक्सटेंड करता है। अगर इस दौरान एक पेशेंट आता है जो कि एसएसआरआईज या से फॉर एग्जांपल एसएसआरआईज नहीं, किसी और चीज को ना लेने की वजह से he suicidal and he commits something, so it's not my professional responsibility and as a human being as well कि मैं उसको सेव कर सकती थी by giving him medication that was needed for that particular point in time, लेकिन मैंने उसको नहीं दी। तो मेरा स्किल वो अल्लाह ताला के, मैंने उसको उसके लिए जवाब दे होने, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डोपामीन की हम डायलिटेशन कर देते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस डोपामीन के पाथवे पे अफेक्ट कर रहे हो। आपको पता है बहुत सारे पाथवेज हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि हर डोपामीन पाथवे पे हर ड्रग का एक ही इफेक्ट होता है। सो आई मीन इट डिपेंड्स ओनली। और अगर मैं मतलब ऑब्वियसली आई वुड नॉट वांट टू हार्म माय पेशेंट। बहुत सारी और थेरेपीज होती हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस है, सोशल अप्रोचेस है, फॉर दैट मैटर आई वुड वांट कि मेरे मरीज जो है बिल्कुल किसी चीज का एडिक्ट ना हो। बट व्हाट इफ द पेशेंट नीड्स दैट, और गिवन द साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हमारे पास मौजूद है हमारे मुल्क में, आप तो किसी पेशेंट को थेरेपी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो व्हाट वुड आई डू? वुड आई लेट द पेशेंट suffer with his depression or bipolar or anything like that? Well, when I say कि let the patient suffer, or yeah, when you say कि let the patient suffer, withdrawal है, तब क्यों? Why are we letting the patient suffer जब withdrawal हो रहा नहीं लेकिन वो तो देखिए, वो तो उसके बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट में what I can do as a physician or as a clinician, I would do that, right? बेस्ट करें, मैं और आप दोनों बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट की बात करें। नाउ जी जी केस प्रेमिस बनाया ना वो सुसाइडल टेंडेंसीज का है, आप खुद बताएं, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, सुसाइडल टेंडेंसीज का पेशेंट, and I'm talking about those patients who are actually suicidal, okay? How many do you think probabilistically do actually commit suicide? well, many of them do actually. Yeah, many is not a number. Now we know the stats. Secondly, how many of those patients that you actually take, उनमें से suicidal tendencies के patients हैं? Less than 10%, right? So that's an outlier. हम general आपके जो traffic है ना patients की, वो उस level की drug क्यों ले रहा है कि जो एक extreme के patient को वाकई में शायद आपको देनी पड़ती हो। I understand you gotta put down some patients. I get that. मैं समझ सकता हूँ, but cannot put down everybody even in short spurts or long spurts. And SSRIs do put down people, and they don't really put down people. We know कि उसको they put up people क्योंकि agonistic drugs हैं. They get a little more energetic and second wind आती है उनको, हर तीसरे काम को ज़्यादा energetically motivatedly करते हैं. But that's a false chemical response जो कि temporarily उसको आएगा, उसके बाद वो deeper cycles के अंदर enter हो जाएगा. And बहरहाल अभी मैं इस तरफ तफसील में जा रहा, I'm just telling you what my point of view is. I'm not saying कि हर दुनिया का साइकाइट्रिस्ट evil plan है, इब्लीस के 2 सींग लगे उसके, no. नहीं, इस पे एथिक्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस है इस बात की कि आपने आगे भी जवाब देना है। आपका नाम क्या है? फरहाना। फरहाना, आप खुद मुझे बताएं, पूरी कौम का एक शोबा, एक महकमा अनएथिकल है, टोटली बैप्टिज्म हो चुका है उसका सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर, बिजनेस साइकोलॉजी के अंदर, और आप ये कह रही हैं कि मैं ये असम्पशन लेके चला करूंगा, नहीं, you know what, APA is not that, psychiatric medicinal professionals are not given that baptism of capitalistic nature वो business या फिर parallel interest नहीं रखते, they are the more ethical people in the planet, then I'm not going to fall for that assumption. I hope नहीं, I'm not saying that. I'm just saying कि just because, for example, just because we have bad politicians doesn't mean that politics is bad. So just because we have
bad on unethical psychiatry doesn't mean that psychiatry in itself as a speciality or as a medicine is bad. What I'm saying is, just because APA is a political tool of the big pharma, to say most of the psychiatrists are going to be influenced or under some sort of duress, some influence. Okay. So आपको खुद ही पता है कौन रिसर्च कर रहा है, आप खुद बताएं ना। पाकिस्तान की भी है ना अपनी एसोसिएशन है। What do you think? What was the last time they actually published something which was against the APA? I doubt if they're ever going to do that. मैंने वही बात है ना, I'm आपको bring me right in the topic. खुद गुलामाना साइकोलॉजी APA की, उसने फिर नीचे भी गुलाम ही पैदा करने ना। सोचने से सही, खुद सोच नहीं रहा एक डॉक्टर कि यार APA कोई आयत दिस तो नहीं है। This is a research body. A lot of people coming together. They publish their own work. They're just, you know, there are a lot of trials going on. There's a lot of opinion that has to be validated over a period of, let's just say, 50 years or 100 years. I get that. Yeah. But you think I'm going to put my son in the petri dish of a psychiatrist? You know what? There's a trial done, FDA approved है, चलो करके देखते हैं। No, नहीं करके नहीं देखते, मेरे बेटे पे नहीं करके देखेंगे आप। Okay? नहीं, it's not like that. देखें, बात वही है कि again it comes back to your own ethics and like you know how much you want to. Nobody would want to experiment with the patient, but अगर आप किसी को सर्विस दे सकते हो, मुझे तो लगता है कि शायद हम लोग ज्यादा सर्विस दे रहे हैं in terms of कि you are listening to people who nobody listens to them. और फिर वही वाली बात है कि आप faith healers इधर उधर जहाँ पे लोग जो है सर मार रहे हैं, तो उनसे कम से कम आप at least you're showing them direction. And it's not I would maybe try minimally possibly drugging my patient, but rather I would tell them कि आप lifestyle improve करें, सब कुछ करें। बट मुझे लगता है कि जितना आप स्ट्रांगली इस चीज को रेजिस्ट करते हैं, उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। लोग कहेंगे हाँ ये तो कह रहे हैं कि साइकाइट्रिस्ट भी बुरे होते हैं, तो आई वुड से इट्स अ डिससर्विस। मुझे अभी भी आपकी बात के बाद भी ये लगता है, तो इसलिए आप अपना थोड़ा, मुझे लगता है स्टैंस को बैलेंस इस तरह रखेंगे। वही बात है कि इट्स नॉट साइकाइट्रिस्ट हु आर बैड, इट्स एक्चुअली द पीपल हु आर इन इट। एपीए इज वन बॉडी, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल एंड डूइंग रिसर्च एज वेल। मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ, उसके बाद आपको भी समझ आ जाएगी मेरा स्टैंस क्या, लोगों को भी समझ आ जाएगी कि साइकाइट्रिस्ट अगर ये कहना शुरू कर देना कि भैया बात सुनो, आपका बेटा या बेटी या आप साइकाइट्रिस्ट नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए, मैं सिर्फ क्रिटिकल केसेस ले सकूँ, मैंने केमिस्ट्री चेंज कर देनी है आपकी, और 100 में से आपके 95 पेशेंट्स जो है ना वो आपके पास, दे शुड नॉट बी टेकिंग, मेरे 5 पेशेंट्स शुड बी टेकिंग, आई स्वेयर यू, आई बिलीव दैट। बहुत सारे घराने जिनके बापों को शोहरों को बाइपोलर है, कोई और मसाइल है, बताते ही नहीं है, ठीक है, और बड़े बड़े क्रिटिकल मसाइल उनके, ठीक है, बहुत मेजर केमिकल इम्बैलेंसेस हैं, उनको वाकई साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मगर ज्यादातर पेशेंट्स जो आप ले रही हैं, आई थिंक दे कैन बी थेरेप्यूटिकली trained by their own social service professionals and even psychologists, but they should not be specimens of some drug or any drug. Okay, so I'm my stance is, I'm not saying कि psychiatrist होने नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ क्रिटिकल चीजों के लिए यहाँ पे बहुत मसाइल बढ़ गए हैं, और पता है कि केमिस्ट्री का मसला है उसकी, तो केमिस्ट्री चेंज करते हैं उसकी, ठीक है। और वैसे भी सराना, you and I both know, I'm going to name a few diseases, you tell me वाकई में any psychiatrist in the world can say okay इतने सालों में ठीक कर दूंगा इस डिवाइस की, मैं बताऊँ आपको, बाइपोलर स्टेप 1 ले लें, स्टेप 2 ले लें, बताएं। नहीं, आई एग्री, बट क्या आप इतना ही क्वेश्चन उस वक्त करते हैं जब पेशेंट कहते हैं मुझे डायबिटीज है या मुझे हाइपरटेंशन है या क्रोनिक इलनेसेस हैं? नोबडी क्वेश्चंस दैट। व्हाई वुड पीपल ओनली क्वेश्चन डिप्रेशन और एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया ओनली? Well, we can actually monitor and see the actual measurable improvement in all of those examples that you gave. For example, diabetic patients में हम इंसुलिन मेजर करते हैं, पता चलता है हमें, and और आपने और क्या बताया, हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन बाय द वे बॉर्डर लाइन पे आ गई आप हाइपरटेंशन बोल के, आप कोई कार्डियक पेशेंट को ले अभी पता चल जाएगा कितनी देर में ठीक होगा, क्या जरूरत है। गैस्ट्रिक पेशेंट ले आए, नेफ्रो का पेशेंट ले आए, ऑप्थेमोलॉजिस्ट बताएगा आपको बस 10 मिनट का काम है या 1 घंटे की सर्जरी है या फिर सर्जरी की जरूरत नहीं, नजर आएगा, हाँ आएगा बिल्कुल। You need to understand when it comes down to neuro, there's a lot of gray, and we better admit that there's a lot of gray, and we're not going to be able to justify ourselves. Right. Okay, लेकिन यहाँ पे बात है, okay fine, ठीक है, I get that what you're saying, ठीक है, although I don't completely agree with it, but ठीक है ना। मैं आप लोगों का वकील हूँ साइकोलॉजिस्ट के सामने, मुझे दोनों में ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उनको मैं असली डॉक्टर के पास भेजो इसको, ये पेशेंट तुम्हारे हैंडल नहीं होना, ठीक है, लेकिन आपने खुद हमें सिखाया कि खुद सोचो, तो इसलिए I would not say कि I agree with you, I do not agree with you. I appreciate that, I respect that, I hope to God कि आपका ये attitude change now and you keep challenging, okay? That's the kind of Muslim women we require. Okay, आपकी टीम में आपने सिर्फ progress करना है by putting your foot on a lot of people's heads. My head I present to you. Okay.
And sir, about the intellectual core, or actually there was another thing that I wanted to ask as well कि जो आपने जैसे अब इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से आपने बताया था कि मतलब लाइक यू वांटेड पीपल टू फिल इन अ टूल, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजी से देखते हैं तो हाउ वुड वी से कि मतलब हम देख उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजी से रहे हैं, लेकिन वी वांट टू यूज द टूल्स दैट आर क्रिएटेड बाय द वेस्ट, तो वो फिर यहाँ पे डिसोनेंस नहीं आएगी कि एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट इमोशनल इंटेलिजेंस इन आवर पीपल बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना एंड सीरा, बट एक्चुअली हमारे जो टूल्स हैं या जो साइकोमेट्री हम देख रहे हैं या जो पैरामीटर्स देख रहे हैं वो वेस्टर्न जो स्टडीज हैं उनसे लिए गए हैं. व्हाई कैन नॉट वी क्रिएट आवर ओन थिंग्स एंड आवर ओन टूल्स बेस्ड ऑन व्हाट द नॉलेज दैट वी हैव एंड व्हाट वी वर गिवन विद. I didn't really get most of what your question is, but yeah, we have to enable ourselves. यही तो मैं कह रहा हूँ, एक्यूमेंट डेवलपमेंट के बगैर कौम नहीं बनने वाली. ये जब तक हम ताबेदारी करेंगे ना, गुलाम हमेशा गुलाम पैदा करेगा. याद रखिएगा, एक बंदे को कहना पड़ेगा कि मैं गुलामी नहीं करने वाला, उसके फिर बच्चे गुलाम नहीं पैदा होंगे. तो साइकोलॉजी वही है कि unless you take the first step towards challenging the whole thing, and you know, ये नेचुरल सी बात क्यों है कि ब्राउन मैन नोबेल प्राइज नहीं जीतेगा और व्हाइट मैन नेचुरल हाँ नोबेल प्राइज जीतेगा. मेरा नाम पीटर जोहानसन हो, मेरी बात में ज्यादा वजन क्यों आ जाएगा आपके ज़हन में? You need to understand that. That's the psychology I'm trying to challenge. Okay. So यही आपकी बात की है. Unless we do our own selves, खैर गलती करेंगे, एक नस्ल गलती करेगी, कोई अगली नस्ल एटलीस्ट अपने इनिशिएटिव तो खुद लिया करेगी. I think that's what you trying to ask.